Dear students, in this video tutorial we are continuing chapter 9 of class 7 science with the topic of properties of soil. So let's start learning. The important properties of any type of soil are the percolation rate of water, moisture content and absorption of water. तो किसी भी तरह की सॉइल में ये तीन मेजर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर, मॉइस्चर कंटेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल में किस तरह की जो क्रॉप है वो ग्रो की जा सकती है। चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर। द अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन्ड थ्रू सॉइल इन यूनिट टाइम इज़ नोन एज पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल। तो क्या है बेटे कि कोई सॉइल कितने टाइम में वाटर को ड्रेन कर पाती है। ड्रेन मतलब आप ले सकते हैं कि ड्रिंक कर पाती है या सीप कर पाती है। तो एक यूनिट टाइम में कितना वाटर मतलब कोई पर्टिकुलर जो सॉइल है वो ड्रेन कर पाती है, उसे हम बोलते हैं उस सॉइल का पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर। पर्कुलेशन रेट को एक फॉर्मूला के जरिए कैलकुलेट किया जा सकता है। पर्कुलेशन रेट का यूनिट होता है मिलीलीटर पर मिनट, विच इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर in milliliter divided by time taken to percolate, which is in minutes. As you know students, particles of sandy soil are larger in size, so they have gap in between them. When we pour water into sandy soil, it can easily drain out. That's why the percolation rate of water in sandy soil is the fastest. And if we talk about the clay soil, particles of clay soil are very fine. Okay, when we pour water into a clay soil, the water will seep very slowly because it does not have any gap. So the clay soil has very slow percolation rate. So we can calculate the percolation rate of different type of soil with the help of this activity. What we need is PVC pipe with the diameter of 5 cm and length about 20 cm. What we have to do, we will take that piece and we place that piece on surface of the soil and just press it with hand. With the help of measuring cylinder, take 250 ml of water and put into that pipe. Note down the time when you are pouring water into the pipe and when the water completely drain out. So we will record our observations and calculate the percolation rate as follows. We are supposing that soil takes 25 minutes to seep 250 ml of water. So to calculate percolation rate of this soil, we will put these quantities into the formula. Okay, in the numerator we will put the amount of water, in the denominator we will put the time. So after calculation we get 10 milliliter per minute, means in 1 minute that soil seeps or drains 10 milliliter of water. Okay, with the same procedure we can check percolation of different type of soils at different places. So our next property of soil is moisture present in the soil. Okay, so let's start reading. Amount of water present in soil is called moisture content in soil. Means सॉयल में कितना वाटर प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, उस सॉइल का। क्लेई सॉइल में सबसे ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है कंपेयर टू द लूमी एंड सैंडी सॉइल। सो विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी वी कैन चेक द मॉइस्चर प्रेजेंट इन एनी टाइप ऑफ सॉइल। स्टूडेंट्स, टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी वी नीड सॉइल सैंपल, बॉइलिंग ट्यूब एंड स्पिरिट लैम्प. What we have to do, we have to pour the soil sample into the boiling tube and we will provide heat to the boiling tube where the soil is present. So after some time we will see the droplets of water on the other end of the boiling tube. Okay, why this happen? It is due to the water present in the soil when gets heat converted into the vapors. Okay, and those vapors when come to the other part of the test tube which is at the cooler temperature, so those vapors again convert into the liquid state and we see the droplets of water on the upper part of the boiling tube. This is the reason why the air above a farmland appears shimmering due to a hot summer day. तो किसी फार्मलैंड में क्या होगा कि जो सॉइल प्रेजेंट है
जब हॉट समर डे होगा तो वो सन की जो रेज जब उसके ऊपर पड़ेंगी बेटे, तो उसमें से क्या होगा, जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसके वेपर्स बनेंगे, ठीक है। व्हेन वेपर्स आर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल ड्यू टू हीट ऑफ द सन, दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट, ड्यू टू दिस एयर अबव द सॉइल एंड लैंड सीम्स टू शिमर. If I talk about the moisture content of different types of soil, sandy soils have 15 to 25% of moisture, loamy soils have 35 to 45%, and the clay soils have 45 to 55% of moisture present in these. Okay, third property of the soil is absorption of water. Absorption of water is the water holding capacity of any soil. Means how much amount of water can a soil hold. Clay soil absorbs the highest amount of water because of its high water retention capacity, means water holding capacity. On the other hand, sandy soil absorbs the least amount of water because of its lower water retention capacity. Students, here we have an activity to show the water retaining capacity of different types of soil. In this activity, we need 3 measuring cylinders of capacity 100 ml, 3 glass funnels, then samples of sandy, loamy and clay soils. So what we have to do, we will place the measuring cylinders in a vertical line, then we will put 3 funnels into it, set filter paper cones in each of the funnels. So what we will do, we have a circular filter paper and we will make a cone of it, and then we will place the cones into the funnel so that the soils cannot move down in the measuring cylinder. So place about 50 gram sample of sandy soil, loamy soil and clay soil in the funnels placed over cylindrical number 1, 2, 3 respectively. Pour 50 ml of water over the soil in each funnel. Let the dropping of water stop. Measure the volume of water collected in each measuring cylinder. So measuring cylinder में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो clay soil वाले मेजरिंग सिलेंडर में सबसे कम पानी है, उससे ज़्यादा किस में है, लूमी सॉइल में, और उससे ज़्यादा सैंडी सॉइल वाले में. तो कंक्लूजन क्या निकला कि जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है वो किसकी ज़्यादा है, क्लेई सॉइल की, ठीक है, सबसे ज़्यादा है, और उससे कम लूमी की और उससे कम सैंडी सॉइल की. इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लेई सॉइल है वो ज़्यादा वाटर रिटेन कर सकती है या होल्ड कर सकती है कंपेयर टू लूमी सॉइल, और जो लूमी सॉइल है वो ज़्यादा वाटर रिटेन कर सकती है सैंडी सॉइल से. So in this video students, we have seen the properties of the soil with the help of activities. I hope by watching this video this topic would be clear to all of you. Thank you students and have a nice day.